Hello friends, welcome to विप्स फाउंडेशन। दिस इज द चैनल जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स स्किल से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं देता रहेगा और आपको जो भी न्यूज़ अपडेट्स चाहिए होंगे उसके लिए डेली अपडेट्स चेक करने होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं PMKVY के, CSC के, निस्बत के, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सो टुडेज न्यूज़ इज Ministry of Skill Development and Entrepreneurship planning to release new definition of skills in line with international standards. The Skill Development and Entrepreneurship Ministry is ready to release a definition of skills in line with international standards 2 years after it launched the Skill India mission. The new definition will clearly outline what constitutes skills, and the ministry hopes to see a substantial increase in the number of skilled persons. That means government is focusing to make India skilled. Based on the new definition, when the steps and programs implementation, Ministry comes out with the next National Sample Survey Office survey on vocational training in 2020. We plan to come up with a clear definition of skills that is aligned with international standard and fulfills the purpose of getting data to give us the actual number of skilled person in the country, said K.P. Krishnan, Skill Development and Entrepreneurship Secretary. Only people trained for the vocational education from Industrial Training Institute under the Answile Skills Development Initiative are accounted for under the existing rules for measuring skills in the country. As per the last survey, the NSSO survey on vocational training is done every 5 years and the next survey is due in 2020. Many rounds of discussions have taken place between the Ministries of Skill Development and Entrepreneurship and Stats and Program Implementation, said a senior official in the Stats and Program Implementation Ministry. User ministries put in their recommendations and expert group takes a call on those. Then we see how possible it is to do data collection. However, they need to give us definition of skills first. The latest NSSO survey on vocational training conducted in 2015 shows and it shows just 2.2% of those aged between 15 and 59 years receive formal vocational training, while 8.6% in the same age group receive non-formal vocational training. This is barely a tenth of the numbers in European countries every year. The report is based on the employment and unemployment survey conducted between July 2011 and June 2012, covering 456,999 people. Prime Minister Narendra Modi had in 2015 launched the Skill India mission, which has an ambition targeting of imparting skills to about 40.2 crore workers by 2022. However, Skill Development Minister Rajiv Pratap Rudy confirmed that his ministry has abundant targets and said the focus is now on quality training. Means government is focusing on, like government ने 36 sector skill council के courses implement किए थे, तो फाइनली गवर्नमेंट जो है अब 36 में से 5 को एक्सक्लूड कर चुके हैं, जिसमें से अपैरल है, ITES है, BFSI है एंड टेलीकॉम है। इन सब सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इसलिए एक्सक्लूड किया है क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि जो बाकी के रिमेनिंग सेक्टर्स का स्किल काउंसिल है, 28 या 29 सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो रह गए हैं, उसके लिए अब लोग ट्रेनिंग सेंटर्स ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है होलसम, मतलब हर तरीके से हर तरीके का वर्कर रेडी करना, ना कि पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर ट्रेन स्टूडेंट्स को रेडी करना। तो दैट्स वाई जो भी न्यू ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ट्राई करें। अभी जैसे ग्रीन जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, सोलर PVC की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंस्टॉलेशन असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, या आपके जिम से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें कोचेस से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड, इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है। इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन सेक्टर स्किल्स के लिए।
ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर रेडी हो। ग्रीन एनर्जी में रिन्यू जॉब होप्स एंड क्रिएट 3 लाख जॉब्स इन 5 ईयर, CEEW NRDC स्टडी। हमारी नेक्स्ट स्टडी या नेक्स्ट न्यूज़ यही हाईलाइट है कि जो सोलर PV इंस्टॉलेशन के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर मेथड के थ्रू बनाई जानी है, तो इसके लिए आने वाले टाइम में इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। India's rapidly growing renewable energy sector will generate a significant number of new jobs apart from giving the country cleaner environment. A study has forecast around 3 lakh such jobs in this sector will be created in the next 5 years, according to the study done by the Council on Energy, Environment and Water and Natural Resource Defense Council. The eventual job potential of the sector according to the study is 34,600 in wind power, 58,600 in ground-mounted solar projects and 2,38,000 in rooftop solar projects. Solar and wind energy employed more than 21,000 people in India in 2016 to 2017, and this is expected to more than double this year with 25,000 more jobs, it is said. Interestingly, setting up rooftop solar projects provides far more jobs than similar projects on the ground. The study estimated that installing 1 megawatt of rooftop solar would create 25 jobs, while on ground each megawatt would require only 3 people. The focus has been on ground-mounted solar and the push reduced tariffs, although it is the rooftop sector which generates more jobs. So the government will have to decide where it wants to focus, said Kanika Chawla, Senior Programmer Lead at CEEW. The government has set a rooftop target of 40 gigawatt by 2022, though so far less than 2 GW has been achieved. As more renewable capacity is added, the demand for maintenance, scheduling and forecasting too will increase. This means still more jobs in those areas. Rooftop is not only creating jobs but entrepreneurs too. But if they are serious about rooftop, proper contracts and sound legal framework will need to be put in place. Otherwise, it could lead to NPAs, as a result of which people will lose jobs, said Sunil Jain, CEO, Hero Future Engines. There is currently sizable skill shortage in this sector. The Ministry of New and Renewable Energy has set up the Skill Council for green jobs to address the problem. The study said solar module manufacturing currently employs close to 2,900 people and that it could employ an additional 45,000 people if demand is met domestically. At present, barely 10% of solar modules used in India are locally made, the rest being imported from China, Taiwan and Malaysia. The opportunity lies at the unskilled worker end. There are lots of people required for the OEM, installation, etc., which need only 1 week to 3 months training. This is where 90% of potential is. It can be done easily by the government through specialized courses wherein there is a quick turnaround of people, said Vinay Rastogi, Managing Director of Solar Consultancy, Bridge to India. 140 से बढ़ाकर 700 करोड़ हुआ झारखंड में कौशल विकास का बजट, 20 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण, मुख्य सचिव। रांची विकास आयुक्त सह योजना व वित्त विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा है कि युवाओं का कौशल विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कारण इस वर्ष कौशल विकास का बजट 140 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ कर दिया गया। विकास आयुक्त सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुल बजट की 10.9% राशि शिक्षा एवं कौशल विकास तथा 10.8% राशि ग्रामीण विकास पर खर्च की जाएगी। झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार 5 सालों में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास करेगी। इसमें 12 लाख को कौशल विकास मिशन द्वारा तथा शेष 8 लाख युवाओं का कौशल विकास विभिन्न विभागों द्वारा किया जाएगा। झारखंड कौशल विकास मिशन के निदेशक रवि रंजन ने बताया कि 15 विभागों द्वारा फिलहाल कौशल विकास कार्य किया जा रहा है। उन्हें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जोड़ना जरूरी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के परामर्शी मनोज कुमार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में देश के 1.17 करोड़ युवाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति पर विस्तृत प्रकाश डाला। पंजाब गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश 100 acres spread world class skill development university at Chamor
Sahib. The Punjab government announced to establish first world-class skill development University of North India at Jamukar Sahib. Chief Minister Captain Amrinder Singh had earlier accorded his approval to set up world-class skill development university at Jamukar Sahib. And the announcement regarding the same was made during budget speech by Finance Minister Manpreet Singh Badal in the Assembly. Disclosing this, Technical Education Minister Charanjit Singh Chennai said that the establishment of Skill Development University at Chamkaur Sahib would prove to be a milestone in the development of Punjab. Mr. Chani informed that this would be the first of its kind skill university in the North India. The Technical Education Minister said that as of now there are only 2 skill development universities in the country, but Punjab Skill Development University would be better than both the universities in the terms of high-tech infrastructure and quality education. He said that this university would be set up on 100 acres and rupees 100 crore would be spent in the first phase. He further said that the 10 to PhD degree courses focusing on skill development would be created, keeping in mind the national and international employment opportunities with 100% placement. Australia and India should come together to skill workforce in sports sector. Australian High Commissioner. India by 2022 would require around 4 million skilled workers to fill sports-related professional vacancies in diverse capacities. This provides a great opportunity to industry to skill workers to meet the rising demands, said Harinder Sidhu, Australia's High Commissioner to India, at the Australia-India Sports Partnership Meet on the theme Importance of Sports Education organized by FICCI jointly with the Australian government. Again, I want to tell you this report is presented by विप्स फाउंडेशन. हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर हैं और हम ट्रेनिंग सेंटर्स को थ्रू न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं. तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. Sidhu said that India was at the cusp of a boom in the sports arena as the country has begun appreciating the importance of promoting and encouraging sports at the grassroots level. Development of industry in sports would not only provide economic but social opportunities. The need was for the government, industry and the youth of the country to work in tandem, referring to the sports agreement between the Prime Minister of India and Australia. Sidhu said that it would enable India to develop opportunities through connecting Australia's global reputation for sports excellence expertise with India's ambition to improve its sports administration and infrastructure. From this news you can understand कि government focus कर रही है कि आप sports से related कोर्सेज को, जॉब रोल्स को बढ़ावा दें या ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करें या ग्रीन जॉब्स जो हैं उनसे रिलेटेड यानी कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन असिस्टेंट वगैरह इस तरह के कोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है. गवर्नमेंट डेली MOU कर रही है हाईटेक कंपनीज के साथ, इंफॉर्मेशन पर कन्वे कर रही है, जॉब रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है. सो बी अपडेटेड. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.